Yeah, good morning, everybody, and welcome to the session. If my audio is loud and clear, please give me a tech check. Yeah, I want a tech check from either Arif, Satyanarayan ji. Good morning, Ashok. Yeah, Ashok, I saw your messages. Clear. See, one thing, अगर आपने कल नहीं देखा तो आपकी गलती है क्लोजिंग पे. कल क्लियरली जो निफ्टी है उसने एक ट्रेंड चेंज दिया था डेली टाइम फ्रेम पे. व्हाट वी डिस्कस्ड yesterday. See, the first reversal of a trend change is always muted. बहुत शांत रहता है, पता भी नहीं चलता कि ट्रेंड अप हो गया by the context of higher lows and higher highs. So we have a clear trend change in the markets. Is this trend change a medium term, long term, short term? No, this is a trend change which says that a low is in place for a strong bounce, pullback, retracement, or start of a fresh leg up. That time will say. Fine, Harpreet. So what I'm trying to say, okay, let me share my screen. Just 1 minute because there are lots of participants who come in the morning session, but they don't come in the evening session. Even if you don't come, make sure you watch the recordings, right? Yeah, before I start, I need to read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and it does not constitute financial advice. So देखते हैं 26 तारीख के दिन मार्केट में क्या है based on the technical data points which is based on price. See, अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे चेंज करूँ ना तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे. These are your trend change points. Can you see this? Higher lows and higher highs. Again over here, high taken out, higher lows and higher highs. Again this high taken out. So again we have a higher low and a higher high. Say I'm a price action person, a classical approach towards charts, what we call the Dow guys out there. My first base is always that. So how many of you had noticed this yesterday? I had highlighted this also in the evening sessions because देखिए जो पहला चेंज रहता है वो बहुत म्यूटेड रहता है, बहुत शांत रहता है, वहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं रहता. So that we have seen. Yeah, Shabaki says you noticed. So now which says that a trend change on the daily chart has happened. On that note, we'll start today. But yeah, we just follow our process. जो 5 चीजें देखनी है वो देखनी है. So headline says US stock futures fall as investors await PCE inflation. तो फ्यूचर्स फ्लैट है. कल डाउ जोन्स 160 पॉइंट ऊपर था. नथिंग नेगेटिव एज फार एज ग्लोबल मार्केट्स आर कंसर्न. ऑल इंडाइसेस आर यू कैन से इज इन अ ओके स्टेज. हमें ये देखना है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है वर्ल्ड में कहीं पे कि हेडलाइंस तो कुछ नेगेटिव नहीं आ रहे हैं. ऑल वी हैव टू चेक दिस. सो अगर इसके बाद हम डाउ फ्यूचर्स पे जाते, आई डोंट नो व्हाई मैं या So futures more or less flattish है. यूरोप माइल्डली पॉजिटिव है. बोवेस्पा एशिया 1% ऊपर है. मेटल इंडेक्स, मेटल पे ध्यान दो सर. निकाय इज अप 322 पॉइंट्स. क्या ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग. So the global markets are right now saying that everything is fine. Okay, no big worries out there. माहौल अच्छा है. फिर आप अपने चार्ट्स पे जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट निफ्टी विल बी अप. डाउन तो नहीं होगा. एज आई सेड आई डोंट वॉच गिफ्ट निफ्टी टिल आई हैव नॉट सीन दिस. बट एक ट्रेंड चेंज हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है आज के ओपन पे. ऑन दैट नोट लेट्स गो एंड चेक गिफ्ट निफ्टी. कभी भी गिफ्ट निफ्टी मत देखा करो सर डायरेक्टली. ओ माय गॉड, इतना बड़ा उछाल तो मैंने भी नहीं सोचा था गिफ्ट निफ्टी में. इट इज अप विद 225 पॉइंट्स अप है गिफ्ट निफ्टी. देखिए ट्रेंड चेंज का ये एक ब्यूटी है. मैं लाइन चार्ट पे करता हूं. द फर्स्ट मूव ऑफ अ ट्रेंड चेंज जो रहता है ना, हाई निकाल देता विच वी कॉल हायर लोज एंड हायर हाइस.
तो यहाँ पे एक बर्स्ट ऑलवेज आता है। ये भी देखिए ट्रेंड चेंज है, हाई निकाल दिया। सिमिलरली वी अगेन हैड अ ट्रेंड चेंज ओवर हियर। डू यू ऑल अग्री फ्रेंड्स? हायर लोज एंड हायर हाइस। कहाँ कहाँ ट्रेंड चेंज है, मार्क करते जाओ। हियर ऑल्सो इट्स अ ट्रेंड चेंज, हियर ऑल्सो इज अ ट्रेंड चेंज, बट एक दिन में खत्म हो गया था। Future change in contract, that's the reason for so up gift nifty. Aditya, I don't know what is all about, but I'm just seeing the price stamp. Future change in contract, that's the reason for up gift nifty. Okay. So gift nifty is up. Aditya says there is a future change in contract. Let's check it out. What is that, Aditya? Uh, gift nifty futures change in contracts. Can you be more elaborate, Aditya, on that? Rollover. GIFT Nifty futures contract recently rollover from August expiry to September expiry. Uh, okay. Traded on National Stock Exchange, GIFT Nifty. GIFT Nifty. Okay, this is. Okay, so you are saying the rollover, Aditya, is creating this big spike? Okay, it's adjustment to Nifty September futures. Okay, Aditya. So this is 25,561. Let me go to. I got it, Aditya. Fine. After that, we go to our markets. तो चलो आदित्य ने बताया रोल ओवर है, एडजस्टमेंट्स है, अगस्त से सितंबर का रोल है, एंड विच इज क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज अगर आप बैंक निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देखो तो भी वहां पे डिफरेंस आता है. So Arif says gift nifty is up by approximately 80 points. Fine. Oh, yeah, Ashok, just tell me, please watch the India VIX. Yeah, Ashok will not violate our rules. उसके बाद क्रूड पे जाते. Sorry, crude we have to check. So now we'll go back to this. देखिए क्रूड पे जो हमने देखा था, कैन यू ऑल रिमेंबर? आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस हाई टू नॉट गेट क्रॉस एंड प्राइसेस कम डाउन, तो अल्टीमेटली क्रूड यहाँ पे सेटल होगा सर. There is no bull I can see as far as crude is concerned. This is a bearish flag which it has breached on the downside. And agar, if you want to see the measuring objectives, this was the pole. The breakout happened at this point, which says that it might even go lower to 64. That's the trend levels for this thing. एंड क्रूड में हम लोग ये चार्ट फॉलो कर रहे थे, विच सेज दैट ओके क्रूड ऊपर जा रहा था, बट देयर वाज नथिंग विच सजेस्ट मोमेंटम स्ट्रेंथ और फर्दर अपसाइड, बिकॉज the moment you see a gap down it tells you this is where the sellers are sitting, and it happened that way. अभी तो फ्लैग टूट गया. So as far as crude is concerned, it's heading down. After this, let's come and check India VIX. So Arif says gift nifty का 80 पॉइंट प्लस पकड़ो. Yeah, good morning. So if I go to India VIX, it's still in this range. So gift nifty says that अभी भी मार्केट हाई लो पकड़ के, जो कि स्विंग हाई और स्विंग लो है, उसके बीच में वॉलेटिलिटी देंगे. Because VIX at this low is a low volatile regime in the markets. लो वॉलेटिलिटी में कैसा रहता है ना, वो जो सडन स्पाइक कल आपको दिखा एक्सपायरी रिलेटेड, या 100.70 से 100 पॉइंट निफ्टी में, 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में, जो आपका एक डेढ़ घंटे में जो मूव आ जाता है, दैट कम्स बिकॉज सडनली देर आर स्पाइक्स, एकदम वॉलेटिलिटी लो और थोड़ा ऊपर आता है, then the moves are really fast one. The price change or the difference is not huge, but the speed is big. So it's a day trader's delight.
अभी हमें यहाँ पे देखना है कि दिस विक्स ओवर हियर कैन इट गो फर्दर लो. देखिए विक्स का अगर बेस है समवेयर अराउंड दिस लेवल, हिस्टोरिकल बेस फॉर विक्स इज समवेयर अराउंड 9. So VIX more or less has come to its extreme on the downside. If somebody wants to know more about VIX and all, see, you go to Market Pulse and you go to magazine. Here in my first issue of a magazine, which was Trading Titan inaugural issues, this is it. Got it, everybody? I have written extensively about VIX. Please download this magazine and make sure you understand all the volatility markers. कि VIX इतना है तो क्या होता है, VIX ये range पे है तो क्या होता है. I've sent you the link. Make sure you download the magazine. Aditya, that I'm planning once a week. So यहाँ पे I have put in detail. It's a 70-page magazine, which is the inaugural issue of Trading Titans, which I want every traders to have a glance look at it. If you like it, you can read further. Yeah, Arif. Everybody is relaxed in the market, Arif. That's what VIX is showing. That means low VIX means nobody is buying protection. Right. After this, let's go to Nifty. So Nifty में हमने देखा अभी भी निफ्टी ने जो उसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था इंट्रा डे पर्सपेक्टिव में, यू हैव टू फॉलो दैट. सो आई जस्ट गो एंड ड्रॉप अ लाइन ओवर देयर एंड दैट विल बी माय रेफरेंस पॉइंट फॉर द डे फॉर एनी ब्रेकआउट्स और for any further up move. So I'll drop a line over here, I'll remove it. And now you come to hourly charts. So this level in 24,368 is your this thing. 50 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और यहाँ पे अगर आप देखो तो आज लग रहा है एक छोटा सा गैप अप आ सकता है. एंड दिस इज वेयर द सेलिंग इज. यू नो व्हाई आई एम टेकिंग दिस. अंडरस्टैंड, कोई भी लेवल आपका रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो पिवट से रहते हैं. अगर सप्लाई और डिमांड आपको देखना है तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी ईआरसी देखनी पड़ेगी, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल. देयर वाज अ बिग सेलर एंड जो बेस रहता उसके पहले का, उसको हम सप्लाई मानते हैं. सेम वे ऑन द बायर साइड, देखिए ईआरसीज आती है ना बेस के बाद, तो वो बेस इज योर बिग डिमांड लेवल. सो मैं इसको ले लेता हूँ. सो दिस इज हाउ निफ्टी इज पॉइज्ड ऑन अ 60. इफ आई गो टू 15, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रेंड चेंज. ये आप रखो एंड write it down on your trading terminal wherever you are trading. This is a 200-day exponential moving average. Now आज बहुत टफ होगा. अगर गैप अप होता तो क्या ये गैप इज अ कॉमन गैप which says that there might be a gap fading, which is a possibility. So आज का जो दिन है उसमें again you'll have to use three things. Number one, ORB. आप ORB अग्रेसिव हो तो 5 मिनट में देकर आप मॉर्निंग ट्रेड करके निकल जाओ, या तो 15 मिनट. सेकेंड इज आपका वीवैप स्क्रीन पे होना चाहिए. थर्ड इज डेली एटीआर लाइंस या तो डेली एटीआर लेवल्स आपको पता होना चाहिए वेयर दे आर. So these are the three things which will play a crucial role in your day's trading. So now we'll highlight what studies relevant for the particular day. अभी यहाँ पे और कुछ डालो तो मीनिंगलेस है आज के दिन. Yeah, Riv, that I highlighted yesterday. So this is how Nifty is. Breakout at 24,361, 24,442, 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है. Anything above that is ATR measure. So if somebody is wondering what is this, make sure you watch the videos or watch the tips and tricks session, which I have explained in great details what it is all about. So if somebody wants where that is, so I'll just give you the link. So whatever we discuss here today, I document it and explain it in details in the Substack Trading Titan section. See, this is tips and tricks. Over here, आपको location में मिलेंगे. Which is the setup, intermarkets and all.
पार्ट 1 पार्ट 2 आप पढ़ लो, सिंपल गाइड टू डे ट्रेडिंग. So I've written it in 2 parts. Okay, if you want, I'll send this link also. See, if you want, you can forward to your trading friends. Let's build a community. uh, so that's Nifty. Very precise, very clear. These are the 3 things which are relevant for the day's trading. ORB 5 minutes if you are an aggressive, 15 minutes, then sit out, wait out, शांति से बैठो, देखो 15 minutes range breakout कौन सी साइड हो रहा है, VWAP डाल के रखो. And but अगर if it takes out this high, then next level is going to be your ATR measure, which I have explained in that note. So yes, sessions, but I don't have that much time to do again everything. So I expect you to be well informed and be educated. So we are all on the same page. इसके बाद मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे जाता हूँ. बैंक निफ्टी अगर आप देखो ना, तो ये लो पे सपोर्ट लिया, नहीं इनसाइड डे तो नहीं बोल सकेंगे. और बैंक निफ्टी में जो विपसॉइंग चल रहा है, जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी में वो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है. सो आई प्लॉट द 200 डे मूविंग एवरेज इन बैंक निफ्टी, और कल जहाँ पे क्लोज हुआ वो 200 दिन का एवरेज है. नाउ द पर्पस इज सॉल्व, सो रिमूव इट. आई गो टू 60 मिनट्स. देखिए 60 मिनट्स में कल बैंक निफ्टी में पूरा दिन एक रेंज पे रहा. ये आवरली कैंडल थी, ओपन हाई ओपन एंड लो, और मार्केट ट्रेडेड थ्रू आउट द रेंज. सो दिस वे आप यहाँ पे एक रेंज बना. सो यू नो दिस इज येस्टरडेज रेंज, एंड येस्टरडे मार्केट ट्रेडेड थ्रू आउट द डे. रेंज के ऊपर नीचे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई खोजो. या गुड मॉर्निंग वेंकट, वी आर अबाउट टू एंड, यू ज्वाइन अ बिट लेट. सो ये आपका आ गया, और ऊपर में अभी भी मैं यही ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गैप है और मल्टीपल रिजेक्शंस है. So this is how my bank nifty is looking like today. कल का this is, I'll write it down. This is nothing but yesterday's range. I will write PD, which is previous day's range. Range breakout पे आपको moves मिलते हैं. So this is bank nifty. I think we are all set today. इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं. गैप अप रहेगा, बट देखना क्या कल की रेंज निकाल रही है, और आपको दैट आवरली रेजिस्टेंस अगर चाहिए जहां पे 50-100 पॉइंट का नीजर्क्स आ सकते हैं, सो देन दिस इज द हाई, दिस लेवल, राइट. सो दिस इज हाउ दीज आर ऑल एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं लेवल्स. तो उसको मैं डिफरेंट कलर पे मार्क कर दूंगा, विच इज ब्लू. The ones which are marked in yellow are the one which might be relevant for that day's trading, and you focus on that levels, at least morning hour. After that देखते हैं फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ तक जा रहा है. This is PD, which is previous day's range. So that's all from my side, friends. Now देखिए मुझे जितना आप करना था वो मैंने किया. Now it's 9:04. Spend another 5-10 minutes. Figure out what you'll go do, which tools you are going to use. Whether it's VWAP, you'll wait for the ORB. ORB में भी 2 रहते हैं, 5 minutes, 15 minutes. उसके बाद 12 बजे के बाद आपको 60 मिनट्स की रेंज देखनी है ओपनिंग. अगर कल आपने देखी रहती तो पूरा दिन बैंक निफ्टी एक ही रेंज पे रहा, which means yesterday expiry did belong to the straddle writers or the strangle writers or the credit spread traders on bank nifty. So as day progresses, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाओ चार्ट्स का. पहले 5 पे रखो, 15 पे रखो, फिर 12 बजे एक बार 60 मिनट्स देख लो. कुछ ध्यान बैठता वहां पे तो वापस 15 मिनट पे आप आ जाओ, फिर 5 मिनट पे आ जाओ. सी एज अ डे ट्रेडर either you toggle, or what I do is मैं तीनों टाइम फ्रेम खोल के रखता हूँ. So what is relevant, I zoom for that day. पहला मेरा चार्ट रहता as per multiple time frame day trader 5 मिनट का, then it is 15 minutes, and then last is 60 minutes. आपको लगता नहीं यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग आ रहा है, then you just zoom that, which might be your trading chart. It could be 5 or a 15. Got it, everybody? This is how a trader's screen should look like. So we have a multiple time frame chart setting and everything in Incred Money Broking. So yeah, that's how the setup is.
So that's all from my side today, friends. Thanks. Have a nice day. I would want you spend some time go through the Trading Titan Substacks tips and tricks, which is day trading location part and 1 and 2. In that, you should have a certain degree of mastery in understanding the location and where your ATR lines are. So thanks. We are going to meet again at 3:45 in the evening for the post-market session. Don't get too excited by what's happening in गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर ऐसा नहीं सवेरे कूद के कोई भी ट्रेड कर लो नो एज आदित्य पॉइंटेड आउट वो कुछ फ्यूचर्स का एडजस्टमेंट था रोल ओवर था इट्स बेस्ड ऑन द अगस्त एंड सितंबर सीरीज सो मार्केट ओपनिंग राइट नाउ प्री ओपनिंग में जो स्टैम्प्स आ रहे हैं वो क्वाइट है तो यू ऑल्सो बी क्वाइट फाइन अभी भूल जाओ गिफ्ट निफ्टी समटाइम्स क्या हैपन एक्साइटमेंट में हम गलत ट्रेड ले लेते इफ यू आर टू एक्साइटेड शट डाउन योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स 9:15 मार्केट खुलता ध्यान भी मत दो कहाँ खुला open your computer after the first 15 minutes candle is completed which is at 9:30 so these are all psychological stuff which you should follow as a trader too much excitement shut down आपको लगता मैं अभी एकदम नॉर्मल हूँ कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है अर्जेंसी नहीं है कुछ भी बाई सेलिंग करो दैट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रेड आपको लगता नहीं यहाँ पे बाई करना इधर ये करना इधर दिस करना दैट मीन्स इतना हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है ना आपका इसमें सौदा सही नहीं बैठेगा थोड़ा 10 मिनट के लिए कंप्यूटर बंद करो आप राइट डज दैट इट हेल्प एवरीबडी that's all from my side. Thanks. Have a nice day, and make sure you put some, give us some comment, and do send links of this session to your trading friends or any groups which you are. So thanks. Have a nice day, friends. Once again.